न्याय, कर्म और ब्रह्मांड का संतुलन। जब भी ये शब्द आते हैं तो सिर्फ एक ही नाम जहन में आता है, शनि देव। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं और पौराणिक कथाओं के सबसे रहस्यमय लेकिन शायद सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक बात सोचिए, क्या सच में कोई अपने किए के परिणामों से बच सकता है? मतलब ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है ना? और यहीं पर इस देवता का पौराणिक अस्तित्व हमारी जवाबदेही और परिणामों के उस सार्वभौमिक डर के साथ एकदम से जुड़ जाता है। भाग 1, द मिसअंडरस्टूड कॉस्मिक जज, यानी ब्रह्मांडीय न्यायाधीश, एक गलतफहमी। अक्सर होता क्या है कि शनि नाम सुनते ही लोगों के मन में एक अजीब सा खौफ बैठ जाता है। लोकप्रिय धारणा तो उन्हें सिर्फ तबाही या दुख लाने वाले देवता के रूप में चित्रित करती है, लेकिन सच कहूं, शास्त्रों की वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। असल में वो एक बेहद निष्पक्ष मजिस्ट्रेट की तरह हैं, जिनका काम ब्रह्मांड में एक नैतिक संतुलन बनाए रखना है। वो किसी द्वेष या क्रोध से काम नहीं करते। उन्हें कर्म फलदाता कहा गया है, यानी कार्यों के फलों के सर्वोच्च वितरक। और देखिए, इस दरबार में कोई भेदभाव नहीं है, चाहे कोई इंसान हो, कोई दानव हो या फिर खुद देवता ही क्यों ना हो, हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। हमारे विचार, हमारी बोली, हमारा बर्ताव, सब कुछ उनके रडार पर होता है, बिल्कुल सटीक और बिना किसी पक्षपात के। भाग 2, बॉर्न फ्रॉम द शैडो, या फरशाई से जन्म। इनका पारिवारिक बैकग्राउंड भी बड़ा दिलचस्प है। इनके पिता हैं सूर्यदेव, जो प्रकाश और अधिकार के प्रतीक हैं, और माता हैं देवी छाया, जो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, परछाई और सहनशीलता का प्रतीक हैं। हुआ ये था कि सूर्यदेव की पहली पत्नी देवी संज्ञा सूर्य का वो भयंकर तेज बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने अपनी जगह अपनी परछाई छाया को रख दिया। अब आप ही सोचिए, जब शुद्ध प्रकाश और घने अंधकार का मिलन होगा तो क्या होगा? इसी घर्षण से शनिदेव का जन्म हुआ, एक ऐसी शक्ति जो पूर्ण निष्पक्षता के लिए ही बनी थी। यहां एक बहुत ही कमाल की बात है, जन्म से ही उनकी शक्ति का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग गहरा सांवला था, जिसे देखकर सूर्यदेव ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। और जानते तब क्या हुआ? उस नवजात शिशु ने सिर्फ एक नजर उठाकर देखा और स्वयं सूर्य पर ग्रहण लग गया। बिल्कुल, उनकी वो पैदाइशी ऊर्जा इतनी केंद्रित और शक्तिशाली थी कि उसने ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्रकाश को भी पल भर में ढक दिया। उनके इसी अद्भुत अनुशासन और शक्ति को देखकर ही भगवान शिव ने उन्हें एक स्वतंत्र ग्रह देवता का दर्जा दिया था। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में तो भगवान कृष्ण खुद स्पष्ट रूप से कहते हैं, ग्रहों में मैं शनि हूं। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि न्याय करने की उनकी अथॉरिटी बाकी कई प्रमुख देवताओं से भी कहीं ज्यादा है। भाग 3, मिथ्स ऑफ द स्लो मूवर। उनके बारे में जो प्राचीन कथाएं हैं वो असल में भौतिक ब्रह्मांड के बहुत गहरे अर्थ छिपाए हुए हैं। जैसे उनके जीवन के 2 प्रमुख श्रापों की बात करते हैं। पहला है उनका लंगड़ापन। ये कोई आम श्राप नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रतीक है कि कर्म का न्याय हमेशा धीमा और बहुत ही व्यवस्थित होता है। और दूसरा, नीचे की ओर देखने का श्राप। उन्होंने खुद अपनी नजरें नीचे रखना चुना ताकि उनकी उस विनाशकारी दृष्टि से निर्दोष लोग बचे रहें। तो असल में ये कोई सजाएं नहीं थीं, ये तो पूर्ण निष्पक्षता के भारी और अलग थलग कर देने वाले बोझ का प्रतीक हैं। और ये बात दिमाग घुमा देने वाली है। स्लो मूवर का ये जो पौराणिक मिथक है ना, वो शनि ग्रह की प्राचीन गणितीय गणनाओं से बिल्कुल सटीक बैठता है। जरा इस टेबल को देखिए, सूर्य सिद्धांत की गणनाएं और आज के 20वीं सदी के विज्ञान के आंकड़े दोनों लगभग 10,760 दिनों के करीब हैं। ये साफ दिखाता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में खगोल विज्ञान और गणित की समझ कितनी ज्यादा उन्नत और सटीक थी। भाग 4, द ट्रायल्स ऑफ 7.5। 7.5 ये सिर्फ कोई आम नंबर नहीं है। ज्योतिष में ये वो भारी भरकम समय है जब शनि जन्म के चंद्रमा के ऊपर से गुजरता है, और ये वो दौर है जो इंसान को अंदर तक हिलाकर रख देता है। तो चलिए इस 7.5 के 3 चरणों को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। पहले 2.5 साल होते हैं मंगू के। इस दौरान इंसान के अंदर का डर बाहर आता है और संघर्ष बढ़ने लगता है। फिर आते हैं बीच के 2.5 साल पुंगू। ये एक तरह से आग की भट्टी है, जहां आपके चरित्र की असली परीक्षा होती है। मानसिक दबाव अपने चरम पर होता है। और आखिरी 2.5 साल होते हैं मरण के। ये पुनर्निर्माण का समय है।
जो लोग विनम्र बने रहते हैं उन्हें इस दौरान आध्यात्मिक स्थिरता और लंबे समय तक टिकने वाले इनाम मिलते हैं। तो देखा आपने, ये कोई सजा नहीं है, बल्कि हमारे झूठे अहंकार को भस्म करने का एक मास्टर प्लान है। और हां, इस प्रक्रिया से कोई नहीं बच सकता। शनि महात्म्य में राजा विक्रमादित्य की एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। उन्होंने एक बार अपने अहंकार में शनिदेव का मजाक उड़ाया था और नतीजा, उन्हें अपना पूरा साम्राज्य गंवाना पड़ा, यहां तक कि उनके हाथ पैर तक कटवा दिए गए। ये तकलीफें तब तक खत्म नहीं हुई जब तक कि उन्हें विनम्रता की पूर्ण आवश्यकता समझ नहीं आ गई। साफ है, दुनिया की कोई भी दौलत या ताकत इस ब्रह्मांडीय कानून को चकमा नहीं दे सकती। लेकिन घबराइए मत, इस भारी दबाव को प्रबंधित भी किया जा सकता है। शनिवार के दिन भगवान हनुमान की पूजा करना सुरक्षा का एक अचूक उपाय माना गया है। इसके अलावा दान पुण्य करना, गरीबों को खाना खिलाना या नेत्रहीनों की मदद करना, ये सब शनिदेव को बहुत प्रिय हैं, क्योंकि वो हाशिए पर पड़े लोगों के रक्षक हैं। आज के समय में भी हम देख सकते हैं कि कैसे स्टीव जॉब्स या नरेंद्र मोदी जैसी हस्तियों ने 7.5 के उस प्रचंड दबाव का सामना किया और खुद का एक बिल्कुल नया, ज्यादा मजबूत रूप दुनिया के सामने रखा। और अंत में भाग 5, द मास्टर ऑफ कर्मा। इन सारी प्राचीन कथाओं से हमें आज के लिए क्या सीख मिलती है? 3 बातें हमेशा याद रखें। पहली, कर्म की अनिवार्यता को स्वीकार करें। कार्यों का दर्पण हमेशा बेदाग होता है। दूसरी, धैर्य और सहनशीलता की कद्र करें। शॉर्टकट के चक्कर में पड़ेंगे तो नुकसान ही उठाएंगे। और तीसरी, अहंकार के विनाश को गले लगाएं। अक्सर भौतिक चीजों का छिन जाना ही हमें हमारी असली आध्यात्मिक पहचान से मिलवाता है। संक्षेप में कहें तो स्थायी सफलता के लिए एक धीमी और व्यवस्थित नींव की आवश्यकता होती ही है। अगर हम इसे आज की मॉडर्न साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान से जोड़कर देखें तो शनिदेव प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल यंग के शैडो सेल्फ वाले कॉन्सेप्ट से काफी मिलते जुलते हैं। वो हमारी जिंदगी से सारे शॉर्टकट्स और झूठे अधिकारों को सक्रिय रूप से हटा देते हैं। परछाई का ये पुत्र हमें पूर्ण वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर करता है। हमें जो चीजें रुकावट या देरी लगती है ना, वो असल में हमारी एक गहरी तैयारी का समय होती हैं। तो अंत में सोचने वाली बात यह है, तत्काल संतुष्टि और रातों रात सफलता के प्रति जुनूनी इस आधुनिक समाज में क्या हम उस धीमी लेकिन अडिग नींव को नजरअंदाज कर रहे हैं जिसकी मांग परम ब्रह्मांडीय न्यायाधीश करता है? याद रखिए, सच्ची महारत कभी जल्दबाजी में नहीं मिलती। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Within the Hindu pantheon, the deity Shani Dev occupies a space where astronomy and the strict mechanics of karma intersect. As the personification of the planet Saturn, he is often met with a mixture of deep reverence and existential trepidation. Modern society prioritizes speed, instant gratification, and superficial success. Shani stands in opposition to these neuroses, enforcing the principles of restriction, delay, and wisdom born through suffering. Devotees attempt to navigate these periods of restriction through specific offerings. Rituals involving black cloth, iron, mustard oil, and black sesame seeds are performed to soothe his mythological afflictions, and in turn smooth the path of the devotee. These rituals are often a response to the belief that Shani is an inherently vindictive force. In popular culture, he is frequently depicted as a malevolent punisher intent on ruining lives. Scriptural analyses suggest a different function. Shani acts as a mirror, reflecting the consequences of an individual's own thoughts, speech, and conduct back onto them. His scriptural designation is the Karma Pala Datta, the dispenser of the fruits of actions. He is the arbiter of the cosmos, tasked with evaluating the deeds of all living beings and delivering precise retribution or reward. This concept is grounded in physical astronomy. Ancient texts like the Sirius Siddhanta correctly identified the slow, heavy mechanics of the planet Saturn, using its 29-year orbit as a symbol for the deliberate, unhurried enforcement of karmic law. Shani's unbiased nature was forged through the alienating and harsh conditions of his own origin. Shani's father, Surya the sun god, possessed a radiance so scorching that his wife, Sanjna, could no longer endure it. Using her ascetic powers, she created a clone of her own shadow named Chaya to take her place. While pregnant with Shani, Chaya performed intense penance, meditating directly under the blazing sun without shade. This unbroken devotion under extreme solar temperatures physically altered the unborn child. Shani was born with a charcoal-dark complexion.
Seeing the child, Surya was repulsed and immediately questioned Chaya's fidelity, doubting that a deity of light could father a child of such impenetrable darkness. This rejection triggered an immediate reaction. As the newborn Shani directed his gaze at his father, his raw energy caused the sun to undergo a sudden total eclipse. Lord Shiva eventually intervened, revealing the truth of Chaya's purity to Surya. Recognizing the infant's detachment and discipline, Shiva appointed Shani as an independent planetary deity with the authority to dispense justice across the three worlds. This early rejection and isolation defined Shani's core philosophy. Because he was cast out by his own father, he learned that cosmic justice must function independently of personal bias or emotional attachment. Shani's physical attributes are defined by mythological curses that serve as technical allegories for the planetary functions he governs. This diagram illustrates the curse of lameness. Whether caused by his mother or his brother Yama, Shani's leg became permanently inactive. This explains the nearly 29 years it takes Saturn to circle the sun, symbolizing the gradual and methodical nature of karmic retribution. He also bears the curse of the downward gaze from his wife, Damini. After he ignored her while in a deep yogic trance, she decreed that whoever he looked upon directly would face hardship. To protect the innocent, Shani chose to keep his eyes cast downward. These attributes are the structural restraints required for a deity wielding destructive power. They ensure his influence is slow, focused, and shielded from those who do not deserve his gaze. Shani's role as a magistrate is illustrated through his interactions with kings, demons, and other gods. When King Vikramaditya mocked Shani's dark appearance, Shani systematically dismantled the king's ego. He stripped Vikramaditya of his wealth and limbs, forcing him to live as a servant until he reached a state of genuine humility. Shani's gaze once severed the head of the infant Ganesha. While tragic, this act facilitated a necessary transition. By replacing the human head with an elephant's, Shani catalyzed Ganesha's transformation into Gajanana, the Lord of universal wisdom and the remover of obstacles. When the demon king Ravana attempted to make his son immortal by force, Shani deliberately moved his lame leg into the astrological house of death. This act of defiance ensured that even the most powerful demonic lineage remained subject to mortality. After Lord Hanuman rescued Shani from Ravana's prison, the two deities forged an eternal pact. Shani decreed that those who worshipped Hanuman with devotion would be shielded from the harshest effects of his planetary transits. These precedents of law and planetary influence were recorded in early astrological texts to guide practitioners in understanding Shani's influence on human destiny. These case studies establish that Shani's trials are a mechanism for instruction. He realigns the soul with its duty through hardship rather than seeking permanent destruction. Shani's judgment is applied today through the astrological phenomenon known as Sade Sati, a 7.5-year planetary transit. This timeline breaks the transit into 3 phases. First, Mangu initiates detachment through rising conflict. Second, Pangu acts as an emotional furnace, stripping away the false ego. The final phase, Marana, is for rebuilding, where those who learned humility receive long-term rewards. Submitting to this methodical timeline, rather than resisting the pressure, builds a form of disciplined resilience that can sustain a person through any crisis. As the son of shadow, Shani reflects the psychological shadow self. He forces individuals to confront repressed realities, limitations, and unresolved behaviors. Modern figures have undergone this pressure. Steve Jobs was famously ousted during his Sade Sati, a period of professional loss that acted as the catalyst for a major realignment of his creative and strategic vision. Another example of a profound shift in personal and political status occurred during this same 7.5-year window of karmic testing. Shani's influence dismantles fragile structures built on deceit or unearned privilege. For those who work with integrity and accept absolute responsibility, his delays serve as a period of profound preparation.
Fearing Shani Dev is often a refusal to acknowledge one's own accountability. For those who embrace righteousness and discipline, Shani is a benefactor who transforms human suffering into the foundation for spiritual liberation.